कम समय बचा रह गया है हमारे एग्जाम को। अभी हम MCS-206 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा, ओके। सो इसका जितने भी जो हम इग्नू की तरफ से हम लोगों को जो बुक मिला है, आई मीन PDF है मेरे पास, ओके। तो उसमें जितना ब्लॉक है वो सारा 1 by 1 कंटिन्यू कंप्लीट करेंगे, एक अंडरस्टैंडिंग लेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट बना के रखा है जो हम पढ़ेंगे, जिसका आंसर निकालेंगे बाद में, ठीक है। क्वेश्चंस हम क्यूरेट किए हैं, तो इससे मेरे को अभी हम जब रिवीजन करेंगे तो एक हमको काइंड ऑफ आइडिया मिलेगा कि हमको क्या क्या पढ़ना है। और ये वो क्वेश्चंस हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस देख कर, लाइक 5 साल पुराना क्वेश्चंस को देखकर निकाल के कुछ कुछ टॉपिक निकाले हैं, ठीक है। और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर किसी को क्वेश्चन देखना है, किसी के पास समय नहीं है, डायरेक्ट वो क्वेश्चन को लेकर पढ़ सकते हैं। बट हम क्या करेंगे, हम सारे ब्लॉक को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ब्लॉक 1 में जो जावा फंडामेंटल से यूनिट 1, ठीक है। यूनिट 1 में क्या क्या है, इंट्रोडक्शन टू जावा, जहाँ पे है ऑब्जेक्ट क्लास डेटा हैंडलिंग एब्स्ट्रैक्शन, ये इन इनकैप्सुलेशन इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एंड फीचर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यूज ऑफ जावा इन इंडस्ट्री और जावा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट एंड टूल्स, JDK, JRE, JIT, JVM, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड देन इन्वायरमेंट सेटअप फॉर जावा एप्लीकेशन, इन्वायरमेंट सेटअप फॉर जावा एप्लीकेशन डेवलपमेंट, गाइस। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक्स है, इंट्रोडक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा, ओके। सो इसके लिए हम यहाँ पे एक शॉर्ट वे में क्यूरेट करके रखे हैं विद अ रियल लाइफ एग्जाम्पल, सो दैट वो जो एग्जाम्पल्स विल गेट स्टिक ऑन आवर माइंड और मेरे को एग्जाम के समय याद रहे। सो क्या है, एक्सप्लेनेशन ऑफ इंट्रोडक्शन टू जावा। So Java is a modern high-level programming language. Java is a modern high-level programming language designed with a clear structure and strong built-in libraries that helps database, network, and graphical user programming. Okay, simple understanding. Java is like a toolbox full of ready-made tools that make programming task easier. It is object oriented, meaning think like humans in object and class, similar to how we see real world things. Real life example, imagine you are a designer and online shop you are designing an online shopping app. Each thing, customer, product, card, and this and that, seen as an object. These objects inherited from customer, adds product to cart. Java handles it through class and method. Because Java is write once, run anywhere idea, the same app can run in Windows, Mac, and Android without rewriting code. Key points to remember it, for example, like Java is developed by James Gosling at Sun Microsystem 1990. Java James Gosling फर्स्ट ये है, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, अब क्या था इसमें, और पॉइंट्स टू रिमेंबर, जावा लेटेस्ट वर्जन इज दिस, जावा इज यूज्ड इन एंड्रॉयड एप्स, वेब एप्स, गेम्स, enterprise scientific apps. Feature like garbage collection is also most important question. It was asked previously, okay. Portability and robustness make it powerful. Development tools, Java के development tools जैसे JDK, JRE, JVM help write and run program. Introduction to object oriented programming. OOP in Java means writing program using object oriented program, means writing Java using class and objects, just like how we deal with real world things. Object and classes definition. An object is a real world entity with identified state and behavior. A class is a blueprint or template that define what data or behavior its object will have. Class बनता है blueprint. Class is kind of blueprint जो decide करता है, class decide करता है कि what data and what behavior it object will have. Data means variable and behavior मतलब method और object. अब simple example, क्लास का बारे अगर बोले तो कार क्लास जो है ब्लूप्रिंट डिफाइन डेटा एंड एक्शन. डेटा फील्ड मतलब कलर, ब्रांड, मॉडल, ये सब डेटा फील्ड आ जा रहा है. मेथड आ जा रहा है कि स्टार्ट, स्टॉप, एक्सेलरेटर, ऑब्जेक्ट, माय ऑब्जेक्ट, थिंक रेड होंडा सिविक, दैट हैज, ठीक है, ऐसे सोचना है. अब शॉर्टकट याद रखने का, क्लास इज अ प्लान, ऑब्जेक्ट इज अ प्रोडक्ट.
Data hiding cover, it protects data from outside interference by making variable private and controlling. Okay, data hiding, okay, it protects data from outside inheritance by making variable private and controlling access through get and set method. Get and set भी एक important question है. Real life example, think of an ATM machine. Okay, you can't see or touch the bank internal balance data. Think of an ATM machine, you can't touch or you can't see or touch the bank's internal balance data. You can only access it through secure buttons like get balance, withdraw. So your balance is hidden. You only interact through safe methods. Okay, ठीक है. एब्स्ट्रैक्शन क्या है? एब्स्ट्रैक्शन, जब भी जावा का बात आया तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम याद है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, क्लास से ऑब्जेक्ट बन रहा है. उसके बाद एब्स्ट्रैक्शन क्या है? एब्स्ट्रैक्शन हाइड कॉम्प्लेक्स डिटेल एंड शोज ओनली व्हाट नेसेसरी. एब्स्ट्रैक्शन हाइड कॉम्प्लेक्स डेटा, complex detail and only shows what is necessary. Real life example, when you drive a car, you just see the steering wheels and this, you don't worry about how the engine burns fuel. ठीक है. Abstraction hide complex details and shows only what is necessary. Abstraction hides complex details and shows only what is necessary. Real life example, when you drive a car, you just use steering wheels, you don't worry about how the engine burn fuel. Similarly, in Java, system.out.println prints text, but we don't see what's the complex code behind it, right? In similar, system.out.println prints text. Next, encapsulation. Abstraction क्या कर रहा है कि it just hide complex data and shows only the necessary thing. Same. अब encapsulation means binding data and method together. Okay, encapsulation means binding data and method together in one unit class and restricting access using private get and set. Okay, encapsulation means binding data and method, that data and method together in one unit and restricting access using private get and set. Real life example, think of a capsule medicine. The ingredients data are sealed inside. Only doctor know how to use it safely. Encapsulation means binding data and method together in one unit and restricting access using private and get and set. Think of a capsule medicine. The ingredients are sealed inside. Only doctor knows how to use it safely, such like private, set amount, get amount, these things. Here is the data amount. Here's the data amount. Private double amount. Here's the data amount is safe and accessed only via method. And we can access this via methods only. Okay. Shortcut capsule equal to data plus code packed together. Data plus code packed together. Okay. Inheritance. ठीक है. Abstraction का क्या है? It hide complex details, so only what is necessary. Encapsulation, binding data and method together, restrict it access using private and restricting access using private get and set. Okay. Inheritance allow one class to use properties and method of another class. Inherit by its grandparent, ऐसे बोलते हैं ना, that this is what inheritance mean. Inheritance allows one class to use properties and method of another class. Inheritance allow one class to use properties and method to another class. Support code reusability. When one class is used properties and method of another class, that means the code is reuse. Okay. Real life example, a car inherits from four-wheeler has engine, gears and steering.
car adds AC, airbags, music system. So car get feature of four-wheeler plus its own extra feature. Next, polymorphism. Polymorphism means many form. Polymorphism, ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, many forms, same function name, different behavior based on the object or situation. Means same function name, different behaviors based on the object or situation. Think of a word draw. Draw a circle. Draw, अगर हम draw बोले तो draw what? मेथड के अंदर बता दिए कि वो सर्कल. ड्रॉ व्हाट? रेक्टेंगल. ड्रिंक. ड्रिंक कैन बी एग्जांपल फॉर पॉलीमॉर्फिज्म. ड्रिंक. ड्रिंक व्हाट? ड्रिंक वाटर, ड्रिंक cold drink, drink milk. These are called a polymorphism. Polymorphism means many form, same function name. Here the function name is draw, but this method is the different. It is talking about circle. Next it is talking about rectangle. It can be talking about hexagon and all these. ठीक है, same name but different behavior. It performs different behaviors. Two types: compile time, static or dynamic. Okay, so they, what are these? कंपाइल टाइम, टू टाइप्स होते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के. कंपाइल टाइम मीन स्टैटिक और रन टाइम. कंपाइल टाइम, रन टाइम. ओके. overloading, overriding, important. This is a really big important topic. Let me color it red so it attracts, then you'll remember and you'll read about it. Compile method, compile static, overloading and overriding. So example, add int, comma int and add double. Decide to compile time, dynamic. Animal dot speak, dog says bark. क्या है? Decide in run time. समझ नहीं आया. Decided in run time. One name, many action. अच्छा, कंपाइल के समय डिसाइड करता है और ये डायनामिक होता है. इट कैन बी चेंज. क्विक रिवीजन. ऑब्जेक्ट एंड क्लास, ब्लूप्रिंट एंड रियल एंटिटी. रियल लाइफ एग्जांपल, कार क्लास एंड होंडा. कार, प्लान प्रोडक्ट. डेटा हाइडिंग, प्रोटेक्टिंग डेटा. एटीएम हाइडिंग बैलेंस है ना, डेटा हाइडिंग. एब्स्ट्रैक्शन, हाइडिंग कॉम्प्लेक्स डिटेल, हाइडिंग कॉम्प्लेक्स डिटेल्स. कार इंजन हिडन है ना. इनकैप्सुलेशन, कैप्सूल का. बाइंडिंग डेटा प्लस मेथड, कैप्सूल मशीन, मेडिसिन. इनहेरिटेंस, रीयूजिंग पेरेंट फीचर. कार इनहेरिट्स फ्रॉम फोर व्हीलर. पॉलीमॉर्फिज्म, वन नेम मैनी बिहेवियर्स. ड्रॉ फॉर डिफरेंट शेप्स. करेक्ट, इतना सिंपल था, ये हो गया. अब इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ऑब्जेक्ट एंड क्लास. An object is nothing but a real world entity that can be distinctly defined. Object possess their own character and feature. Object possess their own character and feature. A class is a template or blueprint. Class is a template or blueprint. Define data finds and method of object of the same type. Object have states and behavior, while a class describe the behavior, states and its type. Object have states and behavior, while a class describe the behavior, states of the object. Data hiding. Data hiding is one of the key aspect of object oriented programming that enables developer to. data hiding नाम से समझ में आ रहा है वो क्या करता है, enable करता है developer to protect their data and hide the implementation detail. Protect their data and hide the implementation detail from outside interference. To implement data hiding, variables in a class should have a private access modifier. Okay, private access modifier. ठीक है. To hide the data, to implement data hiding, variables in a class should have a private access modifier. ठीक है. And can access or modify using get and set method. Get and set method also helps for data hiding by protecting the data using only inside the class, not the outside can access it.
ठीक है. दिस वे वी कैन इम्प्लीमेंट डेटा हाइडिंग. एब्स्ट्रैक्शन का देखते हैं. Data abstraction is the process of finding detailed information and only presenting the essential information to the user. Data abstraction is a process of hiding details and information from presenting to essential information to the user. In Java programming, abstraction can be achieved by using abstract class and interface. In Java programming, abstraction can be In Java programming, abstraction can be achieved by using abstract class and interface. It helps to separate the use of method from the implementation. Encapsulation, again, encapsulation is the process of hiding the data, member and method together in the देखो think of encapsulation in a way like कुछ tablets होते हैं, there you can see some bubbles kind of things are inside that, and the other part is some jelly or can be anything. Okay, so कैप्सूल के अंदर में दो पार्ट रहता है. some capsules are hard solid रहते हैं जो वन सेम कलर के होते हैं, एंड अदर थिंग ना. तो उस कैप्सूल का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं इनकैप्सुलेशन से, वेयर वी हैव द डॉटेड काइंड ऑफ सब्सटेंस और थिंग इनसाइड द टैबलेट, एंड द सेम उसके दूसरे पार्ट में कुछ अलग सा रहता है. दिस इज व्हाट यहाँ पे बोल रहा है, डेटा मेंबर एंड मेथड टुगेदर. डेटा मेंबर एंड मेथड टुगेदर in a secure manner by making the data field accessible to the class member through private declaration. Setter and getter methods. Setter and getter method are used to ensure read only and write only operations. Okay, next, inheritance. Inheritance provides reusability by inheriting the properties and method of one class into another. Inheritance provides reusability by inheritance the properties and method of one class into another. It allows the creation of a new class. It allows the creation of a new class similar to a previously defined class while adding its own feature. The original class is called the super, means parents. The topmost original class is called the super class, and the new class is called the subclass, subchild. Okay, if you can. Polymorphism. Polymorphism is the ability of an object to make many forms. Polymorphism is the ability of an object to make many forms. It allows one interface to be used for a general class. Okay, polymorphism is the ability of an object to make many forms. It allows one interface to be accessed for a general class action. In Java, polymorphism is implemented through overloading and overriding. This to static, compile time and dynamic runtime polymorphism. यहाँ पे देखें ना अभी polymorphism, compile time, two types and runtime polymorphism का है ये. Next, feature of Java short real life memory hints. It is the kind of a real life example based theory जो कि हम लोगों को रिमेम्बर करने के लिए अच्छा होगा एग्जाम के पर्पस में. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. ओके, फीचर ऑफ जावा शॉर्ट प्लस रियल लाइफ. ओके, हाँ. Object oriented. Java is based on class and Java is all about based on class and object. Everything is modeled as object, data plus behavior. Student class, object names with roll number and method at the blueprint product. Simple definition. Java is designed to be easy learn and write code with a clear user friendly syntax. Compared to C++, you don't manage pointers. Simpler code to read. Okay, secure. Java provides security. No explicit pointer runs to the JVM sandbox checks by bytecode. Applets cannot access your file. Portable. Java bytecode runs on any platform with a JVM. Write once, run anywhere. Compile Windows, run class.linux, Mac. Robust. Java emphasizes reliability via strong memory management and exception. Example, automatic garbage collection, remove unused object, exceptions, handle error like file not found.
Okay. Portable Java bytecode runs on any platform. Robustness Java emphasizes reliability via strong memory management exception. Multi-thread Java supports multiple threads so a program can do many tasks simultaneously. Java supports multiple threads so program can do many tasks simultaneously. A music app can play audio, download a file and update UI at the same time. Parallel work करता है. Okay, next architecture neutral. Java produce platform independent bytecode run on JVM regardless of CPU OS. Bytecode is like a universal recipe that can JVM Java virtual machine. Interpreted and high performance. Bytecode in interpreted by JVM compile इस सब नेक्स्ट आएगा तो समझ में आएगा कि है क्या, किसके बारे में बात कर रहे हैं. Convert hot code to native for performance. First run interpreters, later jet compiles. Frequently used method. Distributed Java has built-in support for distributed computing. A client app can call a method on a server object. Dynamic Java supports runtime linking, class loading and reflection. Class dot for name kind of use of Java in industry. IT industry Java is widely used in IT industry for developing and maintaining software. Companies use Java for enterprise web apps and backend service. Okay, so Java widely used in IT service for developing and maintaining software system. Companies use Java for enterprise web apps and backend services. Web application Java is used to create web app that handle HTTP request and response. Java powers big data look like Hadoop used for storing and protecting large data. Scientific application Java is used to research and scientific tools. Simultaneous simulators like Cloud Sim used for cloud computing, webs and mobile apps. Java is used to build both web and Android application. Java development environment tool. ओके ये इंपॉर्टेंट है. जावा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट टूल है जावा डेवलपमेंट जेडीके जावा डेवलपमेंट किट is the complete package used to develop Java application. JDK is complete package that is used to develop Java application. It includes JRE Java Runtime Environment, Compile Java AC Java compiler. Okay, it includes JRE Java Runtime Environment and tool like Java Docs jar etc. Example, when you install Java on your system, you install JDK Java development kit to write, compile and run program. Hello world.java compiling Java hello world.java and running this. Java JRE Java runtime environment. JRE provides all libraries and resources needed to run Java program. Okay, JRE Java provides all the libraries that need to run the Java program. Okay, it includes JVM, class libraries and class loader. When someone sends you .java .class, you don't need JDK, only JRE is enough. When someone needs running a Java game on your computer. वेट इसको फिर से पढ़ना पड़ेगा. मुझे क्लियर नहीं हुआ ये. ओके, JRE provides all Java runtime environment. JRE provides all libraries and resources needed to run Java program. It includes JVM, class libraries and class loader. Example, when someone sends you .class file, you don't need JDK Java development kit, you only JRE do enough to run, like running the Java based game and app on your computer. Okay, JVM Java virtual machine. JVM is a Java version that run on Java bytecode on any computer. It makes Java platform independent. If someone sends a Windows file run on Windows, Linux and Mac using JVM. Just JIT. JIT is the part of JVM. JIT is part of JVM that converts bytecode into machine code. Java environment just in time is a part of JVM that converts bytecode into machine code at runtime to make program run faster. It compiles frequently used part of code. When a Java app runs
repeatedly like a banking system server. When Java run repeatedly, just in one time helps to run faster each time. ठीक है, सिंपल फ्लो ऑफ जावा प्रोग्राम, राइट सिक्योर कोड, वेलकम डॉट जावा एक्सटेंशन से compile the Java compiler, generates java dot class. Okay, it generates java dot class. JVM execute bytecode, give final output of any system. Environment setup of Java application in development. Environment setup of with a real life example to remember you. Writing a simple code. Okay, when you write a Java code using Notepad or any text editor, class welcome नाम का बना है, पब्लिक स्टैटिक void main ये लिखना पड़ता है, फिर system dot println ये लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे क्लास जो है वो क्या है, यूज टू डिक्लेयर अ क्लास, ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्लास। ओके, फर्स्ट ऑफ जावा का बात किया तो क्लास आता है, क्लास ठीक है, और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना, डिक्लेयर अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेलकम का, लाइक अ ब्लूप्रिंट ऑफ मेकिंग मैनी स्टूडेंट। फिर पब्लिक मेक्स मेथड विजिबल टू एवरीवन, पब्लिक मेक्स मेथड विजिबल टू एवरीवन लाइक अ पब्लिक गेट ओपन फॉर ऑल। स्टैटिक बिलोंग्स टू क्लास नॉट ऑब्जेक्ट, स्टैटिक बिलोंग टू class not object, like a rule followed by the student. Okay, void means method return no value, void लिखने से return no value, like giving a speech without like expecting a reply. उसके बाद main, entry point of a program, and then there is a main. Where is the main? Yes, main is the entry point of the program. String, the array args used to command line input, used for command line, like passing name while starting the program, like passing names while starting the program, like passing name while starting. System.print prints the output on a screen. Step to compile and run, save the file, compile, run, and you'll see the output using IDE अगर से यूज करें तो NetBeans, यस, ये एक IDE है। इंस्टेड ऑफ टाइपिंग कमांड्स यू कैन यूज IDE टूल फॉर राइटिंग, कंपाइलिंग एंड रनिंग प्रोग्राम easily. Free and popular Java IDE used widely in industry. Example, you can create a new project class. Open source IDE for Java development, Mac, Windows, and Linux. Supports this provides GUI project and debugging tools. Okay. Key feature NetBeans जो हमें हेल्प कर रहा, Eclipse IDE भी एक है। ठीक है, ये क्या करता है कि ओपन सोर्स IDE फॉर दिस एंड सपोर्ट्स जावा वर्जन, प्रोवाइड्स GUI, एक अच्छा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देता है, डिबगिंग टूल भी रहता है। ठीक, कोड कंप्लीशन, सजेस्ट कीवर्ड एंड मेथड ऑटोमेटिकली, IDE सजेस्ट कीवर्ड्स एंड मेथड ऑटोमेटिकली। IDE नोटपैड में क्या होगा कि कुछ लिखा हुआ नहीं रहेगा, वन each keyword जो जावा के स्ट्रक्चर है you have to write by typing everything. Okay, but with the help of IDE you don't need to write from the scratch. Whenever you start creating Java program or you will create the Java file, it will automatically create the class, a kind of structure, but like जो आपको compile code complete करना है, like जो print करना है, that you have to write by your own. Resources management, manage libraries file automatically. Debugging tool helps find and fix error easily. Compile and build, translate code machine language, यही यहाँ पे बोल रहा है। एडवांटेजेस क्या है IDE का, देखो IDE मतलब प्री बिल्ड बना हुआ जहाँ पे तुमको कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसको बोला जाता है IDE। और विदाउट IDE तुम अपने फ़ोन में अगर नोट वर्ड का कुछ रखना होता है तो नोट होते हैं ना, वो लिखने के लिए उसको पूरा खुद से लिखना पड़ता है। IDE एक काइंड ऑफ स्केलेटन है जो बना बनाया स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ठीक है, सेव टाइम एंड एफर्ट्स, ऑब्वियसली टाइम को सेव करता है कि खुद से इतना नहीं लिखना पड़ेगा, फाइल बनाओ बन जाएगा पूरा, जो जो तुमको प्रिंट करवाना है, जैसा तुमको प्रोग्राम चाहिए वो तुमको कहीं लिखना पड़ेगा। IDE मेक्स डेवलपमेंट फास्टर विथ टूल्स, शॉर्टकट्स एंड एरर प्रिवेंशन, auto completes and instant compilation, save typing and debugging time. Obviously enforces standards, provide a uniform development environment for all program in a team, share templates and code library, ensure everyone follows the same
And project management, help organize projects and documentation, GUI based व्यू ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट कोड कमेंट्स। ओके फाइन। तो ये रहा यूनिट 1 जो कि बहुत अच्छे से क्लियर हुआ, समझ में आया। ठीक है, यूनिट 1। नेक्स्ट में क्या पढ़ेंगे हम लोग? बेसिक ऑफ जावा। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आ रहा है इसको पढ़ने में। ठीक है, तो इसमें हम लोग का ये हो गया, इसमें कुछ स्ट्रक्चर है, इसको देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट एंड क्लास, क्लास नेम सर्कल है, मेथड गेट एरिया गेट ये डेटा फील्ड्स रेडियस इज दिस। ठीक है, इससे यहाँ पे क्लास थे 3 ऑब्जेक्ट द सर्कल क्लास, ये सर्कल क्लास से ये बना जिसमें रेडियस 1 है, ये रेडियस 25 है, 125। ठीक है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ओके, डेटा हाइडिंग आ गया, ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट इंटर मेथड ऑफ बॉडी एंड ब्लैक, ये कुछ है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन इनकैप्सुलेशन, ये देखो ये दिस इसी का हम बात कर रहे थे। ये हो गया वेरिएबल्स एंड ये होल क्लास मेथड्स के बिहेवियर। इनहेरिटेंस सुपर क्लास इसके पेरेंट बेस क्लास से यहाँ पे इनहेरिटेंस हायरार्की। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म्स डेटा ड्रॉ एरिया, डेटा ड्रॉ एरिया, फीचर ऑफ जावा, distributed object oriented, simple, secure, platform independent, robust, portable architecture, dynamic interpreter, high performance, multi thread, ये सारा। उसके बाद जावा कोड कंपाइल बाइट कोड जेवीएम चलता है सब में। जावा डॉट जावा फाइल कंपाइल करता है, जनरेट्स जेवीएम आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। ये क्या है? ओके, जावा डेवलपमेंट किट के अंदर पूरा जस्ट इन टाइम जावा वर्चुअल मशीन, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, जावा डेवलपमेंट किट। ठीक है, फाइन, दैट इज ऑल इन द यूनिट 1।